morning students. Renu here with new online class 8. Topic Indian Constitution and the need for law. Chapter 1. It's related to your civics books. Can you understand the word civics? Already you have read this in earlier classes, है ना? Word politics means Rajniti means a group of people run the country in a good manner, that is known as constitution, well-mannered government. But first I am going to tell you the meaning of topic. It is related to your Indian Constitution, civics book, and we will discuss in need for law. First I am going to explain you the term need for law. Need means necessity, आवश्यकता, जरूरत, and law means कानून, नियम, rules, regulations. Why do we need this all kind of things? क्यों ज़रूरत होती है हमें इन सब चीज़ों की? Can you say me? Law is very essential part of Indian Constitution, and to run a country in a systematic way, it's very much necessary to follow the rules, to follow the Constitution. First, civics is clear to you, means for running a good government in a systematic manner, we have to go through the political parties, political manners, and some rules and regulations. And now I am going to tell you that we live in India country, and in this country different people belong to different caste, religion, beliefs, ideas, and they have some different working style, wearing style, tradition, religion, etc. According to them, now listen, one example I am giving you. We go to school daily, we have our own school, and separate reason, separate rules for the particular school. In this school we are going to study, means किसी स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ के अपने रूल्स हैं. क्यों है वो रूल? डिसिप्लिन बनाने के लिए, आपको एक सिस्टम देने के लिए. यू शुड मेंटेन योर ओन सिस्टम. 8 o'clock लगेगा, 1:30 ऑफ होगा, 12 o'clock रिसेस पीरियड है. आफ्टर देन बस 2 पीरियड पहले लगेंगे, 4 पीरियड बाद में लगेंगे. दीज आर द रूल्स टू रन अ स्कूल, अ इंस्टीट्यूट. एंड सेम थिंग इज एट योर होम. मॉम इज़ द होम मिनिस्टर, है ना? रूलिंग्स आपके लिए हैं. सम रूल्स, डोंट गो फ्रॉम दिस साइड, पिक योर utensils and put inside the kitchen and make it properly. Wear off the dress, set up the dress. So many things are there. Don't go to that side. Shut down the TV. Don't see just now. Don't go through laptop. Don't touch it. It's only for mama. These are the rules for home. So in this way we can say different rules and different regulations are necessary to run a home in a systematic manner. Same thing is there to run India country. To run a country with a government with a systematic manner, in disciplined manner, we have to follow some rules and regulations. We need to make some rules and regulations, and when we have set our ideas and our rules separately, and they made a brief, then a detailed explanation about the rules, and according to these rules we put our small act. ठीक है, पहले रूल्स फ्रेम हुए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द फ्रेमर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. आफ्टर देन उसे थोरोली यूज़ किया गया, और वो सारे रूल्स अकॉर्डिंग टू योर और अस और एवरीवन, हर किसी के ध्यान को रखते हुए, डिग्निटी को, उसको बनाया गया. आफ्टर देन रूल्स एंड रेगुलेशंस वर कॉमन इन इंडिया कंट्री. ओके, Constitution. What is Constitution?
Constitution is a set of rules and regulations. As per my given example, I already explained that Constitution is a set of rules and regulations to run a country in a systematic way. Now what we have to know, we need one government, है ना, सरकार की ज़रूरत पड़ी. सर लिसन किड्स, नाउ व्हाट हैपन, गवर्नमेंट कैन रन इन अ सिस्टमेटिक वे. वन मैन can't hold on all over the country from north to south or east to west. It's not possible for one man, one president, one prime minister. It is not possible to run the country from head to feet and go through street to street and town to town. So they have decided as separate persons. They have performed different occupation, different posts regarding governor, prime minister, president, etc. And the state level MLAs are there, CM, Rajasthan, they made so. These were the things कि एक कंट्री को अच्छे तरीके से रन करने के लिए क्या किया जाए. हम छोटे से बड़े और बड़े से छोटे तक का लेवल देखकर उसके अकॉर्डिंग वहाँ अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करें, सो दैट इंडिया कंट्री कैन स्मूथली सर्वाइव कर सके. होगा क्या, when we go on road we move from this side, है ना, right side or left side, we move always left side. Then what happen, and the other ones are coming from the other side. So if we all are going in same side and they are coming from this side, what will happen? Always clashes, always accidents, always misbehave can occur due to the clash of ideas. यानी एक रूल है कि रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, उनके भी रूल्स हैं ना. रोड रूल सेट किए गए हैं, क्यों सेट किए गए हैं, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो. तो हमारी नीड क्या है, हमारा फर्स्ट जब हम घर से निकलते हैं वहाँ से ही हमारे रूल शुरू हो जाते हैं. हम एक ही साइड में चलते हैं ताकि दूसरे वाले से हमारा एक्सीडेंट ना हो. और इन चीज़ों को जब हमने रूल बना दिया, सेट कर दिया, फिक्स करके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया, तो वो हमारा लॉ बन गए. और जब हम लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं, देन इट श्योरली इट कैन बी से वी कैन गेट पनिश by judiciary system. Law, judiciary punish us और prizes also, है ना, best rewards भी मिलते हैं, prizes भी. So now I am going to first topic, Dowry Act. Let us take, we have cleared this topic, need for laws of country, why they are good and most important. Now Dowry Act provision passed in 1961. It became seen on breaches on property for the lady and for a girl gift by her parents. It was a voluntary act and the dowry was seen as the brides, दूल्हा दुल्हन, marriage and some gifts were given by the parents, known as dowry. If a girl failed to bring dowry, she humiliated and even tortured. Even then, सती तक कर दिया जाता था पहले. Burned alive in their law as punishment for not bringing. जिंदा जला दिया जाता था अगर कोई लड़की अपने साथ खूब सारा डॉवरी यानी गिफ्ट्स लेकर नहीं आती थी. तो उसे बैन करने के लिए फर्स्ट एक्ट कौन सा बनाया गया, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट इन 1961. This was the main act. Due to this act, amendment was done in 1961, prohibit the demanding, giving and taking of dowry. That was punishable. Act was further amended in 1986. Amendment means सुधार करना, a little bit change with constitution, okay, with law. So क्या change किया गया, person who has been convicted can face up to 5 years of imprisonment. 5 years imprisonment means go to jail for 5 years. ये उनको
इम्प्लीमेंट कर दिया गया। पहले बैन था, अगर कोई करता मिला तो उसे 5 years के लिए जेल हो जाएगी। नाउ फीमेल फर्टिसाइड, this was the most important and shameful talk nowadays. Female ferticide so misbehave with the baby girl. It is on rise. Practice has affected India's sex ratio. 2001 census shows a decline in number of female age group of 0 to 6 compared to the 1991 census. 2001 census and 927 females per 1000 male in the age group of 0 to 6, 945 families, 1000 male in 1991. So, practice to female foeticide, parental diagnostic technique, चेकिंग होती है अंदर फर्स्ट बेबी पैदा होने से पहले उसे टेस्ट करके चेक किया जाता है। एंड देन रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन टू मिसयूज एक्ट PNDT in 1994. It was brought to effect from 1 January in 1996. PNDT Act prohibit the determinants and disclosure. PNDT Act prohibits the determinations and dissolution the sex of the fetus. भ्रूण अभी स्मॉल बेबी होने से पहले ही अंदर फिनिश कर दिया जाता है। सो एनी वायलेशन ऑफ PNDT Act कैन रिजल्ट imprisonment and fine. सेम थिंग इज देयर, imprisonment and fine. इट इज़ कम्प्लीटली बैन नाउअडेज। अगर ऐसा करते पाया जाता है, गॉड गिफ्टेड बेबी पैदा होने से पहले ही अगर मार दिया जाएगा तो उसे भी फाइन और जेल में जाना पड़ेगा। इट्स द रूल, दैट इज़ लॉ। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा और गलत होती है तो उसे रोकने के लिए रूल बनाए जाते हैं, और रूल सिस्टम में आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद हमारा जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू इट विच इज़ गवर्नड। ओके, it is the supreme law of the country and legislation to the state principle and down in the constitution. People from different group are laid down in form of a constitution. Rule of law, I already explained in my just online class. Just I am going to sum up this topic once again. Rule of law demands that people occupying position in different organ of the state and holding power should be guided by law, not to be allowed to act in an arbitrary or unlawful manner. Citizens should be protected by law, enjoy equal rights as well as discharge equal responsibilities. Each and everything is equal in the eye of law. Legitimacy of law. What is legitimacy? Indian Constitution is to bring about social equality. This was expressed after independence in the form of Article 17, means provide authority to institution to implementation law. अभी इंडिया कंट्री को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए कुछ पावर्टी, कुछ जो अथराइज थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पर्टिकुलर पीपल को, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को एक अथॉरिटी दे दी कि आप लोग इन रूल्स को फॉर्म करो, लागू करो, इन्हें दूसरे लोगों पर लगाओ। सो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इंडिपेंडेंस फॉर्म एंड अनटचेबिलिटी ऑफेंस वाज पास्ड. दिस वाज आल्सो एन एक्ट पास्ड इन 1955. And what were the main agenda of this Untouchability Offence Act are certain acts were declared vendors on ground of untouchability. Who are untouchable? Lower caste people, minor people, है ना? So it is punishment for such offence like denial of admission to any person to public institution like place of worship, school and hospital. अगर यहाँ पर इन लोगों को, अनटचेबल्स को कोई टच करने से या एंटर करने से रोकेगा तो उसे बैन किया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा, क्रिमिनल है वो। अभी आपने देखा आजकल अनटचेबल टर्म यूज़ में नहीं है, ये वर्ड हटा दिया गया। अमेंडमेंट टू द एक्ट इन
26 AD declared to practice of untouchability. Okay, now what is the meaning of loss and dissent? Dissent means disagree. Here it is the word dissent and it means disagree, नहीं मानना. So why each and everything is disagree? सहमत नहीं होना means sometime there are laws and there is different well. Dissent means refusal to abide by law or it means the refusal to obey the law. Change in the action, policy, law of government in social and political system is approval. Or French Revolution and Russian Revolution overthrew the autocratic rule of their respective monarch, one man rule, kingship. Okay, dissent or obedience takes place under extraordinary circumstances. Satyagraha of 1930. This was the main act related to Mahatma Gandhi. It was passed in 1930. Why it was passed? One revolution occurred on the reason of Mahatma Gandhi and Britishers don't permitted to Indian people to make salt. Firstly they denied to make the salt. After then they had not given permission to sell at high prices. Okay, so they made different taxes also on it. Gandhiji highlighted the condition for the masses. British imposed salt tax according to which manufacture and salt became a British monopoly. 1929 Congress installed the fight for complete independence and including non-payment civil disobedience movement and Gandhiji decided to make Salt Act. Government passed this act and they started Salt Act. Most inhuman tax. 12 March 1930 Gandhiji embarked historic Dandi March. Lasted 24 days. People surged forward in large number to join the Satyagraha in different places and Gandhiji broke this at Dandi place and they made a law. They made salt openly, defying the British monopoly in a press statement. Okay, and Gandhiji argued people everywhere to violate the salt law. Now what happened? Gandhiji ने अपना सबके सामने गांधी ने जो दांडी यानी पैदल यात्रा शुरू की थी सॉल्ट के लिए. जब वो चल रहे थे सॉल्ट के लिए तो लाखों लोग उनके पीछे हो लिए थे. पूरी लोगों ने उनके पीछे जाना शुरू कर दिया था. एट लास्ट दांडी प्लेस पर जाकर उन्होंने नमक बनाया सबके सामने और इस रूल को तोड़ा और ब्रिटिश पीपल्स की मोनोपोली को ब्रेक कर दिया, जिसे सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए कंपेल करना कि जो ट्रूथ है सॉल्ट बनाएंगे उसे कम प्राइसेस पे बेचेंगे, उस पर टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे. नेक्स्ट वॉज द एंटी लिक्वर मूवमेंट. एंटी लिक्वर मूवमेंट बिलोंग टू लिक्वर रिलेटेड टू वुमेन. कैन यू गेस? women can make a great effort to prohibit the liquor system in India country. People of Andhra Pradesh realized that alcoholism was adversely affecting alcoholism was affecting them. Women of Andhra Pradesh and Haryana witnessed anti-liquor movement and agitation for imposing a ban on action and sale of arak. Arak means liquid, alcoholic liquid like drinks, and started subdued adulteracy drive in the interior village Dubagunta in Nellore district, anti-arak movement in Andhra Pradesh. After then, people of the state widely campaigned in favor of Prohibition Act. Women who were in the infront movement, many organisms who also joined. Several places women destroyed and burned the arak shops. क्या किया? लेडीज़ ने आंध्र प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह के पीपल इकट्ठे होकर, जब लोग वहाँ के लिक्वर करते थे, नशा करते थे, अल्कोहल लेते थे, उनके अगेंस्ट विमेन ने एक आंदोलन चलाया
मूवमेंट चलाया जिसे द एंटी लिक्वर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अरेक शॉप्स को जला दिया ताकि कोई उसे सेल ना कर सके। दे अपोज्ड एंड अनेबल टू शॉप अटैक द अरेक वेंडर। इट वॉज फोर्स्ड टू oppose and impose a ban on the sale of अरेक। इस तरह से बहुत सारी बैड डेविल्स थी जिनको यूनिटी के साथ धीरे धीरे बैन किया गया, बैन करके रिमूव देन पॉज और देन पनिशमेंट और डिफरेंट पनिशमेंट सेट किए गए। इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बाय डे सेट होता चला गया। सो रूल इज an established principle run for a good action. Such instances of popular dissent were the salt satyagraha and anti-liquor agitation. Goal of dissent is to bring about a change in action, policies, laws, government of the constitution. So in this topic we have cleared that what is constitution and why it was necessary and how it was formulated in India country and for what purpose it was there, for the maintaining discipline and system and rule or regulations in Indian country. Have a nice day. Thanks. Bye.